बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष ग्रुप के लिए आप बात करना चाहती हैं और वह ग्रुप है महिला वर्ग। तो महिला इनका व्याख्यान है और जैसा कि हम कोशिश करते रहे हैं कि हमारे सीरीज में एक वैरायटी हो, मुद्दे अलग अलग हों और उसके हिसाब से टारगेट ग्रुप्स अलग अलग हों, तो आज महिला वर्ग के संबंध में डॉक्टर नताशा दुआ अभी अपने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगी और कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर दुआ का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं और हम ये उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपने व्याख्यान को प्रारंभ करें। डॉक्टर नताशा दुआ। Good evening, sir. Good evening, everyone. Thank you so much for making me the part of this program today, sir. I'm really obliged. And today I'm going to talk on a topic which is every woman experience it. But I don't think so that anyone talks about it. And that is menstruation or PMS, that is premenstrual syndrome. Now, I think so. I would like to share my screen, sir. So please allow me to share my screen. Ma'am, you are already a host, so you can share your screen of this. ये खत्म हो जाएगा, आगे चला जाएगा, फिर आराम सन्नाटे हो जाएगा। Now I'll be talking about the mental health. How does the mental health affect our menstrual cycle, affect our mental health? Every woman goes through the cycle every month, but no one actually cares that how does it affect our mental health and how is it connected? क्योंकि हम इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं कि menstrual cycle क्या चीज़ और periods क्या है, क्योंकि हमें लगता है कि एक normal चीज़ है जो हर फीमेल इस चीज को फेस करती है, तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है. वी डोंट गिव दैट इम्पोर्टेंस टू एनीथिंग. एंड मेंटल हेल्थ तो वैसे भी लास्ट में हम लोग सोचते भी हैं कि इसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है. जनरली स्पीकिंग, इफ अ पर्सन फील्स लो, द लास्ट थिंग जो वो सुन करके उसको बेटर फील होता है, दैट इज are you having your periods or are you going through the periods? क्योंकि उससे उस फीमेल को एक कॉन्फिडेंस ये लगता है कि there is someone who's taking care of. She feels secure that she's going through something and someone is standing by the side who can help her in many ways. So that gives a bit confidence to a person that a person is there to look after her, or a person is there to think or take care of a person who understands her. The physical manifestation which a person deals during the menstrual cycle, sometimes it can be very tough and it actually disturbs a person's daily life. कोई बच्चा अगर एडोलसेंट है, स्कूल जा रहा है, एकदम से नॉर्मल उसकी लाइफ है, पूरे महीने वो स्कूल जाती है,
फ्रेंड से मिलती है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है, बट फॉर सम टाइम, फॉर 3-4 days, she is not able to cope up with her studies, can't concentrate, cannot go for her sports classes, cannot enjoy the hobbies which she used to. या कोई लेडी है जो रोज अपने ऑफिस जाती है, पर एकदम से 4-5 दिन वो लो फील करने लग जाती है, ब्लीडिंग बहुत हैवी होने लग जाती है, ब्लोटिंग होती है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो उसकी वजह से उसका जो एक डेली रूटीन जो चल रहा होता है, एकदम से उसके अंदर एक डिस्टर्बेंस आ जाता है, which actually disturbs her personality, and sometimes it becomes so difficult for a person to even concentrate on work or studies that she's not able to cope up the things. So these are the physical manifestation that a person deals with, especially adolescent age. Now, if we talk of PMS, what actually PMS is, premenstrual cycle syndrome, it is a time before the period when a person might experience a lot of weird symptoms. And researchers says that 3 out of 4 menstruators actually experience PMS, which is a lot of people, by the way. So if we try to understand that what actually a person goes through is, 90% of females have these periods and the symptoms throughout their menstrual cycle. That is something very common, that everyone feels it and goes through that cycle. But sometimes women experience PMS a week or 2 before they bleed. And this can leave a person to feel depressed, lethargic, irritable, aggressive, sometimes frustrated, upset, nervous, etc. PMDD, this is another word a person comes through, that is premenstrual dysphoric disorder. It is characterized by more significant premenstrual mood disturbances that can seriously impact relationship and impair functions. Many women with premenstrual dysphoric disorder experiences clinical levels like depression, fatigue, panic attacks, and that is 3 to 8% of women suffers. And this is not that sometimes or some of the other women is suffering. It is, if a woman is suffering from PMDD, that single person has to face PMDD every month. And every month she has to go through these things. Now, if we talk about that periods are something, or menstruation is something that every woman has to go through every month. But how does our mind get affected to it? If it is something very natural and normal, then why is it so that our personality changes only those 3-4 days or 5 days, that it gets affected to our daily life? The menstrual cycle starts on the day of a period. The level of estrogen and progesterone at that time goes low, which affects on the chemicals that a brain releases. Now, what happens is that the low level of estrogen, which is linked with serotonin, of course, we all know that it is a happy chemical. At this time, it goes so low that a person doesn't want to even feel happy. A person feels very worthless, hopeless. Sometimes people are found crying and isolate themselves. And otherwise, that person is very lively. Entire month, she's very lively, she's very active, very concentrated. But it is only these 3, 4, 5 days that a person gets so low. But the moment the periods are over, the levels of estrogen and progesterone increases. At that time, the person feels happy and she's the way she was before those 5-6 days. So the person's mind or brain gets affected just because of these chemicals, and because of that, our entire body, entire system gets affected for those few days. Now, the emotional symptoms that occur during menstrual cycle is, a person feels very depressed. That is very obvious. If you're not able to do anything, a person who's very active, very lively, all of a sudden she has cramps, she has pains, she doesn't feel like going out, she has heavy bleeding.
So that person feels very sad and depressed and helpless, as if the person cannot do anything, because she feels so uncomfortable at that time that she's not comfortable in even doing the daily work or moving around with the friends or colleagues. Anxiousness, mood swings, that is a vast thing which female goes through. Person feels sometimes very happy simultaneously. The person feels very sad, very angry, very frustrated. Concentration, lack of concentration. Person doesn't feel like doing anything. She's not concentrated on the work. She's not concentrated in the studies. She's not concentrated in her hobbies. She doesn't want to do anything. She cannot sit for a longer time at one place and work. Disturbed sleep. Then very common thing is isolation. Females usually isolate themselves during this time because they think that they are having pain or they are not able to go out because of their cramps, bleeding. So they may be not comfortable with their outfits which they are wearing. They have to be very careful. They don't go socially out somewhere in the functions, they avoid going. So these are the emotional symptoms that a female goes through every month. Now, the physical symptoms that a person goes through is acne. That is very common with the females. It is all, many times we come across females who say that during our period time, during or a day or a week before, they have the complaint of pimples and acne on their faces. But that is only for that duration. After the periods are over, the faces are actually clean. They don't need any medication for that. Bloating, headache is very common. Low energy because they feel very lethargic. They don't feel like doing anything. They don't have the energy level to even work or do the things which they do in their daily life. Breast tenderness, low back pain, joint pain, food craving. At this time, there are many people who have found that they don't eat sweet entire month. They don't eat junk food entire month. But in these 3-4 days or a week time, they eat a lot of sweets. They eat a lot of जंक फूड. जो कभी पिज्जा बर्गर्स नहीं खाते हैं, उनको पिज्जा बर्गर्स बहुत खाने का मन होने लग जाता है, and they start having those things frequently. Abdominal cramps, constipation, nausea. These are the physical symptoms, although many of these symptoms female faces, but it's not necessary that these are the only. There may be other symptoms also a female goes through, but these are common symptoms which every female goes through. Now, after going through so much, the tips that a person should do, what are the tips that a person should do those things that she feels comfortable during her menstrual cycle? First is track your emotions throughout your menstrual cycle. That is, tracking your cycle is a great way to plan and track any changes to your mental health. You can track your periods by using period tracking apps. Like there are many apps nowadays which are on our mobile phones, that is Flow Health. There are other also, I have only 2 of them with me. These apps do not only track your menstrual cycle, but they also receive the alert for when you might approach PMS or your periods. That means when you have an app on your mobile about your health, so there is an alert before a week or before 15 days that your menstrual cycle is expected on these dates. So you are mentally prepared that the symptoms which you go through or the problems which you will be having or the mental problems or the mental phase which you will be facing at that time, you are mentally prepared with it. Then get plenty of rest. Sleep deprivation can have a negative effect on mental health, because the hormones level drop during the periods, which can make a person feel tired, and lack of iron can affect the energy. Because at this time, when a person is having heavy periods, she does not even have a right diet. She's not able to eat anything. So a person at that time, that is why it is always said that iron is must in your diet. So
is this time it is important to take plenty of rest, because the hormones at that time are so much dropped that you don't even feel like getting up also. So it's necessary that a person should take good rest. Engage in physical activities. Regular exercise is very important for physical and mental health. It's also helpful with regulating the hormonal levels. It is said that yoga, slight walking, yoga is very effective during the menstrual cycle. That is why nowadays we have light exercise. We join yoga classes. We have online classes also, which a person can get into. Then nourish your body. A person should have a very healthy diet. Protein, iron should be included in the diet. So you become, a female becomes more active and she can do her all the daily work, and she can have a daily routine work. Stay hydrated. Researchers say that staying hydrated can help a woman mental health. On an average, a woman lose about 1 to 2 ounces of blood during a regular period, contributing to additional loss of fluid. It's important to drink plenty of water to replace this loss, because heavy bleeding can cause so much of weakness. So if you're not hydrated, you can become sick also. Next, what we can do is pamper yourself. I personally say that you should always pamper yourself. But during this period time, the menstruation time, a female should pamper themselves more, especially by giving more importance to yourself. So a person should get a simple, a very light massage, because there is always a muscle pain and a back pain. So there should be a very light, slight massage. Then listening to happy and a favorite playlist, which makes you really happy. Doing something which you feel like doing, which are your hobbies, for example, painting, reading, which in daily life, if a person is working or if a person is studying, they don't have that much of time nowadays to even think about their hobbies. So this is 4-5 days when you feel so low. You can start painting, or you can do something which makes you happy. So you should pamper yourself at that time. Stay connected, which is as well, of course, very important. We should try to be connected with family members, friends, professionals, your colleagues, which is difficult sometimes to take care of your mental health. If you're not connected with people and you isolate yourself and you're sitting in the room, which usually women do, they sit in the room with cramps, they think that they're very sick, they cannot do anything, so they need rest. So sometimes they sit in a corner in the room on a bed, or they lie down without even interacting with anyone. Going socially in a function is something very far off, but they don't even feel like sitting and talking to someone. So it is very important to come out of the room and meet people. In case if there are cramps and you're not actually able to come out, so in that case you can do one thing. Nowadays we have social media which connects us more, so we can talk to our friends, our family members. We can make video calls, which is very easy nowadays. We can be more active on social media so that we can be connected and we can, take care of our mental health. Because if these steps which I am discussing with you, if you even take 2-3 steps out of it also, that will, I think so, help a lot to manage the mental health during this time. Now, how to relieve PMS and period symptoms? Because I've discussed before also, because that is the time when a female goes through so many steps, so many things, that she has pain also, she has irritation also, she has agitation also, she has frustration also, then depression, anxiety. So along with this, when you have a sort of very bad pain, cramps are there, or you have pain in your back, you cannot even move, standing and doing the work becomes a bit difficult. At that time, yes, painkillers or medicines are helpful. But still, again, I'll say that there are people who Google and take out the medications, and the medicines are very easy to find on Google, and they take out a painkiller. That can be very harmful also.
So it is always better to talk to a doctor, consult a doctor, and take the right medication, which actually does not harm you, because sometimes wrong medication can also harm your kidneys. So you have to be very careful while you are taking the medication also yourself. So don't take the medicines by using Google or going through any other. A person goes to a chemist and say, I need a painkiller, and you get a painkiller. Nowadays, it is not very safe also. Second, using a heating pad or hot water bottle, which is very common and very safe also, and is used to relieve the cramps. That is simple thing that a person can get relief with. Reducing your salt, that can help you with bloating and breast tenderness. And supplements, which is very important, folic acid, iron, calcium, which every female should start earlier, so that there is no harm to them when they are menstruating. Because iron and folic acid helps a lot during your period. So you should always keep it in mind that it has to be a part of your life, not only during the periods, but also once you start with your period. Such experiences make us realize that there is a huge need for safe space for women to talk about these problems without getting judged. On top of that, it is so confusing to find a right doctor, because finding a right doctor, a professional where you can go and talk, where you can go and share your problems, where you can share your experiences, is very difficult. You cannot go to and talk to any person. They can even misguide you also. So it is always better to find a person who's there to help you out and who's not going to take you to a wrong way. I think it is really important that people should have positive experience with medical and professionals. Sometimes what happens that you go to a doctor and you're misguided. You have other things in your mind and you ask and you're not satisfied with those answers. And maybe it comes to these things that many people get suffered because of that. So this should be stopped, and there should be a need, and they end up suffering sometimes with the things that becomes a huge, and it becomes more difficult. I think a few days back, Seema ma'am was also discussing about going to a rural areas and searching about the girls. They did not have even the idea about the sanitary pads, if I remember. We were discussing the other day. And that is the truth. People are not aware of even sanitary pads or menstrual hygiene, क्योंकि उनको awareness है ही नहीं, कोई बताने ही वाला नहीं है उनके घर में, because there is something in their mind, they cannot discuss it with their family members. This is a very big thing in India, that they don't want to open up to their parents also. Going to a father is very different thing. That is, I think, so somewhere impossible also for them. They don't even think about talking to their mothers also. I remember I was talking to a person. She said that she did not have the idea of menstrual cycle also before she menstruated, because there was no one to even tell her. And once she started menstruating, her family members did not allow her to go to the kitchen. I still remember, I have seen so many families, even in the cities, that these 4-5 days, they don't allow you to go to the kitchen. They don't allow you to attend the rituals. They don't allow you to go to the temple. Why is it so? If I go in past, it was very common not going to the kitchen and not going to the temples. There was a reason behind it. क्योंकि उस समय sanitary pads available ही नहीं होते थे. There was a cloth which was being used. तो एक mentally जो उस समय problem होती थी वो ये होती थी कि why is it so that I'm not allowed to go to the kitchen? मतलब वो 4-5 दिन आप kitchen में नहीं जाओगे, आप impure हो और बाकी time आप pure हो. How is it possible? Now, if we think about it, that why was it? It was because there was the chances of infection, because they were not using the proper thing which was being used. They were not aware, and that was not available also. Nowadays, things have changed. Things are so much available and they're so easy
easily used also, and they're very safe also. But still there is a myth, there is still a discrimination with the females that these 4-5 days are problematic, they cannot go in the kitchen. Why now? There is no answer to it. There are still many families. There are still many families that don't want to talk on this topic openly. There is hesitancy in talking to it. I personally think it is really important to talk about these things because we really don't talk about menstrual cycle openly and also don't think as important topic. हमें लगता है ये तो एक रोज की चीज है, हर महीने आती है. Why is it important? Every female has to go through it. कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दर्द होता है तो वो तो सबको ही दर्द होता है. This is what everyone usually speak and this is the reply which we get from our family members as well. कि इतनी बड़ी ये चीज नहीं है. But they don't want to talk, they don't want to give the reasons to it. If a person gives the reason that why the pain is there, why are the mood swings, if people are aware of it, then only we can explain. If we are not able to talk about it, how will we know the reason and how will the adolescents know the reason to it? We should try to talk and take steps on this matter, which can save many women's lives, because it is really important topic which people are not ready to talk on. So I think so it's really painful sometimes that we don't even think talking about it. And I think it is now the time that we should be aware of it and ask the youth, and even as a psychologist also we should go and speak about it. I think so I think so it's really important for us to now pull up our socks and take the steps for these things also, because we've been talking about many other topics, drugs, substance abuse, alcohol, but I think so we still hesitate in talking on these topics. Thank you so much. Thank you, ma'am. You have presented your lecture very nicely on a very important topic. Thank you, sir. I will invite some queries of the, if they are. Sure, sir. But one query from my side I want to ask from you. Sure, sir. Is it audible, madam? Yes, 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 sir. Okay. So just do you find that there are some misconceptions and stigma attached with this problem, particularly in the rural women? Is it so? Definitely, sir, not only in rural areas, it is in cities also. This stigma is still in cities. There's still in discrimination in cities also, sir. Not only rural areas. So I think it must be done how this stigma should be, because it causes a number of health problems to the women. So I think it is very important to remove the stigma and misconceptions. Definitely, sir. What should be done for this? So there should be programs. No, sir, there are programs from government side also, and they go, but still people are not aware of it. So we have to take the steps and we'll have to teach them, giving them the reasons. Because if I have also taken the classes many times in rural areas, they don't even ask you the questions because they're scared of their parents. Especially mothers have this in their mind. Don't talk in front of the people. Don't talk in front of your father, because this is something which should not be discussed. So still there is a stigma.
still there is hesitation that this is something very normal and we have to live like this. That is why there are so many problems with women, and there are many women who die because of these things, just because of carelessness. Yeah, that's one approach I find, just as you talked about, that what Dr. Seema did in a school, that she went in that school with the sanitary pads and she talked about this problem, and she found that not even any girl was able to understand what is the problem, what is the sanitary pad and everything, and she distributed among them. So I think in collaboration with the companies who are producing the sanitary pads, the awareness program must be started in the schools, particularly among the girls, about, and they should be freely, though government distributes freely to the women, but there is lack because they are not so much interested to go in the schools and distribute these things. So something must be done from our side also, and a awareness program should be launched in the rural areas also, and some strategies be formed. This I was agree my with you. idea about it. I agree with you, sir. Very true. That has to be done. Thank you. Thank you, sir. Any person और भी कोई व्यक्ति अपना विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, प्लीज इनवाइटेड. समय बचा हुआ है थोड़ा. बिल्कुल हाँ सर. हाँ बिल्कुल 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 थोड़ा बात बिल्कुल किया आप जाए. उसकी बात कर रहे हैं, एकदम करें. और खास करके टॉपिक ऐसी हो जिस पर बात ही अवॉइड की जाती है, तब तो और जरूरी हो जाता है कि बात. राइट सर, वेरी ट्रू सर. एक चीज जो समझ में आती है वो ये कि वहाँ हमें सलूशन कुछ अलग ढंग का चाहिए, क्योंकि मैं सोशियो इकोनॉमिकली वीकर ग्रुप को जिस रूप में देख पाता हूँ, मुझे लगता है कि हमारी पॉपुलेशन में 35-40% लोग तो फैमिलीज अभी ऐसी हैं जिनके लिए, चाहे वो एडोलेसेंट गर्ल्स हो, वुमेन हो, उनके लिए पैड आर नॉट अफोर्डेबल. वो अब कितनी कम कास्ट आ गई है आई डोंट नो, लेकिन जो भी कास्ट हो, 5 रुपये 10 रुपये कुछ भी, आई थिंक 1/3 पॉपुलेशन तो हमारे कंट्री में ऐसी है, एटलीस्ट उससे ज्यादा भी हो सकती है, जिनके लिए ये अफोर्डेबल नहीं है. उस पर अलग ढंग का सलूशन चाहिए. दूसरे की बात करने में हेजिटेशन है. क्या इस बात को इस ढंग से समझने की जरूरत है कि बजाय इसके कि इसको छिपाया जाए, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सेलिब्रेट किया जाए? बिल्कुल सर. हम पुरुषों के ग्रुप में, एटलीस्ट पुरुषों के बीच में जो बात होती है, और शायद महिलाएं भी इस तरीके से बात करती होंगी, आई जस्ट गेस, आई एम नॉट श्योर, कि किसी मर्द में, पुरुष में रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, वो पावर है स्टिल, देन he is a respectable person in some way. अब महिलाओं के केस में विदाउट these अभी बात तो करें. हर बार जब वो आता है तो ये अनाउंसमेंट है कि आई एम हियर. ठीक, और आप शो करेंगे तो whenever I feel like so, I have got the gift of the God that I can create, I can reproduce. Right. तो इसे होना तो चाहिए सेलिब्रेशन का. और आपने पॉइंट आउट किया कि जो हमारी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है उसमें न केवल पीएमएस पर और भी तमाम जो हमारी सेक्सुअल लाइफ है इसके बारे में हम लोगों ने टैबूज क्रिएट कर रखे हैं. ये जरूर देखता हूँ कि जब हम लोग स्टूडेंट थे और जब आज की साइंस की किताबें देखता हूँ, आई फाइंड कि
क्लास 7-8 के लेवल पर साइंस में ये टॉपिक्स आती हैं, एडोलेसेंस और रिप्रोडक्शन, क्योंकि वही एज है जहां पर अब वो, तो एटलीस्ट जो पढ़ रहे हैं उनके सामने तो वो जानकारी ला जाएगी. बट आई टेल, आई शेयर एक्सपीरियंस because I am connected to a school and I find मेरा तो इंटरमीडिएट तक ही साइंस का बैकग्राउंड था, बट आई एंजॉय always reading something in science area. But I find that women teachers are also very hesitant. वो साइंस टीचर्स उस टॉपिक को पढ़ाने में बहुत हेजिटेट करती है. ट्रू सर, वेरी ट्रू. क्योंकि एक लगता है कि अरे कैसे इस पर बात करें. उनकी अपनी अपब्रिंगिंग, वो जब स्टूडेंट थे उनके जो एक्सपीरियंसेस थे, अब हम लोगों ने तो वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ने पढ़ाने की प्रोसेस में वो हेजिटेशन, और फ्राइड को पढ़ने पढ़ाने की प्रोसेस में वो हेजिटेशन ओवरकम किया. एंड यूजुअली आई नीड टू शोल्डर द बर्डन विद देम. और कई बार तो न्यू कमर टीचर होती हैं तो ओके, डोंट हेजिटेट, कम विथ मी, आई एम टीचिंग, यू सी देयर इज नथिंग टू टेल जिसमें कि हमें हेजिटेशन होना चाहिए. यस, कुछ बच्चों को, खास करके लड़कों को, ये बातें सुनने में वो नया सा लगेगा, कुछ अजीब सा लगेगा. हालांकि आजकल के बच्चे ऐसे भी नहीं हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेस हैं. लेकिन अगर ये हम लोग प्रॉपरली टीचिंग कर पाए और इसको जैसा कि मैं व्यू कर रहा हूँ कि इसे वुमेनहुड को सेलिब्रेट करने का एक ओकेजन माना जाना चाहिए, तो आपसे मैं थोड़ा समझना चाहूंगा कि आपने उसको क्लोजली समझने की कोशिश किया होगा कि किस हद तक, क्योंकि फैमिलीज में एक कंडीशन और है कि जब ये सिम्टम्स आते हैं तो बहुत बार बेटियों को तो नहीं शायद उतना, लेकिन बहुओं को तो बिल्कुल, अरे इसके नखड़े बहुत है, वैसे ही नाटक करती है, ये सारा भी सुनना पड़ता है. लेकिन क्या एम्पैथी और सिंपैथी किस हद तक इस पेन में रिलीव करने का काम, सपोर्ट करने का काम करती है? दैट आई विल लाइक टू. अभी हमने डिस्कस किया था, ये टॉपिक हमारा डिस्कस हुआ था कि यूजुअली लोग यही सोचते हैं कि पेन हो रहा है तो ये तो नॉर्मल सी चीज है, एवरी फीमेल गोज टू एवरी मंथ, और स्पेशली डॉटर इन लॉज के लिए ये ज्यादा होता है, डॉटर्स के लिए कम होता है, क्योंकि बेटियां अगर लेटी हुई तो तबीयत खराब है, बहुएं लेटी हुई हैं तो वो नखड़े दिखा रही हैं. इसी चीज को तो समझने की सर जरूरत है कि केमिकल्स उस टाइम पर, या जो फीमेल पेन, जो फीमेल उस समय फिजिकल सिम्टम्स जो उसके होते हैं, उसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब्ड होती है. फिजिकल सिम्टम्स को समझने के लिए, जैसे आपने बोला कि साइंस में पहले भी पढ़ाया जाता था, ऑफ कोर्स आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज अ सब्जेक्ट बायोलॉजी, जो अब कॉमन साइंस में हो गया, पहले वो बाइफरेटेड होती थी, पढ़ाया जाता. मैंने जब तक पढ़ा था उस जमाने में नहीं था. अच्छा, इंटरमीडिएट हम लोगों तक के टाइम पे सर था. वो मेढक के बारे में पढ़ता था, कॉकरोच के बारे में पढ़ता था, ह्यूमन बायोलॉजी बिल्कुल टैबू. अच्छा, लेकिन अब ये कोर्स में है और हम लोगों ने अपने टाइम पर भी पढ़ी हुई है. इट इज वेरी कहा कि अच्छी बात है ये. लेकिन अवेयरनेस, ये सर अच्छी बात है, क्योंकि ये समझना पड़ेगा लोगों को. अभी भी ये टैबू है कि फादर्स के सामने या फादर इन लॉ, फादर के सामने तो है, फादर इन लॉ के सामने तो बहुत ही बड़ी चीज होती है कि बहू ये बात बोल दे दैट आई कैन नॉट वर्क बिकॉज आई एम हैविंग मेंस्ट्रुएशन, आई एम गोइंग थ्रू दैट पीरियड, सो आई कैन नॉट वर्क. ये तो आप कह ही नहीं सकते हो. लेकिन ये समझना पड़ेगा अब मेल्स को भी. ऐसा नहीं है सोशल मीडिया है ऐसी चीज, एवरी पर्सन इज अवेयर ऑफ इट. नहीं है ऐसा कि दे आर नॉट अवेयर. अब ये बहाना अगर वो बना दे कि हमें बिल्कुल पता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता. येस, आई टॉक अबाउट दी एज जो अब हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो आज भी पर्दा रखते होंगे. लेकिन अब जो फादर इन लॉज हैं या जो अब इन लॉज होते हैं, वो ये सब चीजें समझते हैं सर, और इस पर ओपनली वो बात भी करते हैं. दे ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट येस, अगेन आई विल से देयर इज नो अवेयरनेस. वो नहीं समझ पाते हैं कि इस समय क्या प्रॉब्लम हो रही होती है फीमेल को.
तो ये तो हमें सर समझाना भी पड़ेगा और ये समझना भी फैमिली मेंबर्स को पड़ेगा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इट इज नॉट ऑलवेज अ पर्सन वांट्स सिंपैथी, ऐसा नहीं होता है सर। अगर तबीयत खराब होती है, हमें वायरल है, जैसे कोविड हुआ, एवरीवन अंडरस्टूड दैट कोविड वाज द टाइम दैट एवरीवन वांटेड रेस्ट। तो इसी तरह अगर अ पर्सन सेज दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेल्स समझ जाते हैं, if a person says I'm not feeling well and I need rest for 3-4 days, समझ में आता है सर। तो it's better that we speak more openly on these topics, and now it is a high time, sir, that we'll have to understand. Thank you. Any other comments, any queries? I think nobody is to ask any question from Dr. Natasha. Okay, no problem. I express my sincere thanks to Dr. Natasha Dua for giving such a nice lecture on a very sensitive and very important topic. And certainly there should be a program to create awareness among the girls particularly, and particularly from the rural areas. And it is very essential, and we should go ahead in this direction. Thank you, Dr. Dua. Thank you Thank so you very much. much for your nice lecture. Thank you, sir. And now I would like to tell that we have some developments during this series, and our website is ready for presentation. So Mr. Ashish Pandey has worked hard to create the website of the association, and he has just floated it. So I will request Dr. Ashish Pandey to please come with the website of the association. Mr. Ashish Pandey. Yes, sir. Just a minute. I'm showing. आप कुछ बता भी सकते हैं क्या आपने बनाया, कैसे बनाया, क्या चीजें आई, कैसे आई, क्या क्या चीजें उसमें दी गई. यू विल हैव टू नरेट आल्सो. हाँ सर, बस उसमें एक्चुअली अभी बस एक चीज रह गई है. जो मेन जो डोमेन जो अभी हम आपसे बात कर रहे थे, क्योंकि वो जस्ट अभी परचेज हुआ है हमारा, तो उसमें छोटा सा टाइम लगेगा अभी उसको लाइव होने, पर हम वेबसाइट जो है वो लाइव दिखा सकते हैं. हाँ हाँ दिखाए दिखाए, कोई बात नहीं. बस एक मिनट, मैं लिंक ओपन कर रहा हूँ. इस जो ये वेबसाइट जो अभी डिजाइन हुई है, इसमें जो हम लोगों ने चीजें डिस्कस करी हैं कि हमें ई डायरेक्टरी है या ई बुलेटिन है जो हमारे यूट्यूब के जो या जो हम लोग लेक्चर सीरीज कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं किसी भी कम्युनिटी साइकोलॉजी के जो भी हमारे सीनियर मेंबर्स हैं या जो न्यू मेंबर्स भी हैं, तो उन सब का जितना भी एक्टिविटी है वो सब हमारा इस वेबसाइट पे डिस्प्ले रहेगा और हम उसको टाइम टू टाइम उसको वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं. इसके अलावा जो CPAI जर्नल है वो भी इससे इंटीग्रेट हो जाएगा, तो उसको भी हमारा यहाँ से एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगा. इसके अलावा जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनकी भी पूरी लिस्टिंग रहेगी. जो वेबसाइट का लेआउट है वो कुछ इस तरीके का है. ये वेबसाइट का लाइव व्यू है.
इसमें ये स्लाइडर जो है ये चेंज होता रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग स्क्रीन शेयरिंग में देख रहे हैं तो इसलिए ये चेंज नहीं हो रहा, पर ये लाइव वेबसाइट में जहाँ जहाँ भी हम लोग जब भी इसको लिंक को ओपन करेंगे, जो इसका URL है वो कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया.com, ये वेबसाइट का URL है। और इसमें जो प्रोग्राम्स के जो हम ये देख रहे हैं, होम, अबाउट अस, कमिटी, प्रोग्राम, सर्विसेज, ई लाइब्रेरी, रिसर्च एंड पब्लिकेशन, कॉन्टैक्ट एंड गैलरी। तो जो हमारा अबाउट अस है, इसमें हमारा जो भी CPAI का जो भी प्रोग्रेस है वो पूरा इसमें दिया गया है। कमिटी में जो भी हमारे कमिटी के मेंबर्स हैं एज पर द डिपार्टमेंट हेड, वो यहाँ पर हमारा अवेलेबल रहेगा। प्रोग्राम में हमारा जो स्कूल वेलनेस प्रोग्राम, कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम और कम्युनिटी वेलनेस प्रोग्राम, वो हमारा यहाँ पे पूरा कंटेंट हमारा दिखेगा। सर्विसेज में जो भी सर्विसेज CPAI ऑफर कर रहा है वो सारी सर्विसेज यहाँ पर विजिबल रहेंगी। ई लाइब्रेरी में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि PDF हो गए, बुक्स हो गए, इसके अलावा स्टडी मटेरियल वगैरह हो गया, वो सारा हमारा ई लाइब्रेरी में मेंशन रहेगा। रिसर्च एंड पब्लिकेशन में जो हमारा जर्नल है CPAI का, वो यहाँ पर हमारा विजिबल रहेगा और उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। गैलरी में जो भी इवेंट्स हैं जो अभी रनिंग में है, वो सारे इवेंट्स की फोटोग्राफ्स हमारी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। और ये कुछ अभी सैम्पल फोटोग्राफ्स पड़ी हुई हैं इसमें, जो अलग अभी तक अलग अलग इवेंट्स हुए हैं उनकी ये फोटोग्राफ्स हैं। ऐसे ही ये अभी फोल्डर व्यू में आ जाएगा। जब फोल्डर व्यू में आएगा तो ये हमारा इवेंट के हिसाब से दिखना शुरू हो जाएगा कि जब जब जो जो इवेंट हुआ है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर ये ऑल और इवेंट देख रहे हैं, तो ऐसे यहाँ पे कई सारे आइकन्स आ जाएंगे। जैसे कॉन्फ्रेंस हुआ तो कॉन्फ्रेंस 2021, कॉन्फ्रेंस 2022, या कोई सेमिनार हुआ तो सेमिनार का आ जाएगा, यहाँ पर फोल्डर बन जाएगा। फोल्डर के अंदर में हमारी ये सारी फोटोग्राफ्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। कॉन्टैक्ट में ये यहाँ पर हमारा मैप वगैरह इंटीग्रेट हो जाएगा और एड्रेस वगैरह हमारा यहाँ इंटीग्रेट हो जाएगा, तो वो सिंगल स्टॉप हमारा वहाँ पे दिखने लगेगा। ये जो नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड में हमारे यहाँ पे जो भी अपकमिंग इवेंट्स हैं या जो भी बुलेटिन रिलीज हो रहे हैं या जो भी अपकमिंग जो भी चीजें होने वाली है, वो सारी यहाँ पे फ्लोट करेंगे। तो वो नोटिस बोर्ड में सबको यहाँ पे नोटिस मिलती रहेंगी कि क्या क्या नोटिस हमारी आ रही है। जैसे अभी जो हम लोग ये वर्चुअल लेक्चर सीरीज में डे बाय डे जो हम लोग रिलीज करते हैं रिमेम्बर लोगों को याद दिलाने के लिए, तो वो हमारा यहाँ पे फ्लोट करता रहेगा कि आज किसका लेक्चर है। हम उसको क्लिक करके वहां पर डायरेक्टली लेक्चर को अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे अपकमिंग इवेंट्स डिस्प्ले करेगा। जो ये हम इवेंट वाला सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे इवेंट्स जो है वो फ्लोट होते रहेंगे। और ये जो इवेंट फोटोग्राफ है, ये यहाँ पर हमेशा हमारी वो इवेंट की फोटोग्राफ्स फ्लोट करेंगी जो लास्ट इवेंट हुआ होगा, उसकी फोटो यहाँ पे फ्लोट होती रहेंगी। हेलो, यहाँ पर हमारी कोर कमेटी मेंबर्स और इसके बाद में जरा मीटिंग में है, मैं अभी आपको मिलाता हूँ 5-7 मिनट में। जो भी एसोसिएशन के जहाँ जहाँ भी रजिस्ट्रेशन होंगे या जो भी एफिलिएशन होंगे, उनके यहाँ पर लोगो यहाँ पर दिखाएगा और इस तरीके से ये वेबसाइट पूरी हमारी फंक्शन करेगी। तो ये हमारी वेबसाइट पूरी लाइव हो गई है, कंटेंट वगैरह सब कुछ इसमें आ गया है। अब जो भी आप लोगों के इसमें सजेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और जो ये हम लोग ये पट्टी देख रहे हैं लेटेस्ट अपडेट वाली, ये लेटेस्ट अपडेट में जो भी रिसेंट हमारी एक्टिविटीज होंगी वो यहाँ पे स्क्रॉल होती रहेंगी इस पट्टी में, और हमें पता चलता रहेगा कि लेटेस्ट अपडेट क्या है CPAI की तरफ से। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है जो वेबसाइट अभी लाइव हुई है। ओवर टू यू सर। बहुत अच्छा आशीष जी। वेबसाइट डेवलप करने का काम बहुत आसान काम नहीं है। टेक्निकल पार्ट तो एक पार्ट है, उसके लिए सारे मटेरियल को इकट्ठा करना और उसको एक विजन की जरूरत होती है। उसका काफी अच्छा बन गया है और लाल साहब को भी बधाई कि बहुत दिनों से उनकी चाह थी, और आपको बधाई और धन्यवाद दोनों कि आपने इस पर सिंसियरली वर्क किया है। आजकल के दौर में बिना वेबसाइट की ऑर्गेनाइजेशन की पहचान होने वाली नहीं। नई जनरेशन उसी माध्यम से हमको
जानने वाला है, पहचानने वाला है और जुड़ने वाला है। तो वेरी सिंसियर थैंक्स फ्रॉम मी आशीष जी। ठीक, थैंक यू सर। और जैसा रामजी लाल सर ने और कुमुद मैम ने जिस तरीके से इसमें एक ओवरव्यू दिया था, क्योंकि बहुत पहले कुमुद मैम ने डिस्कस किया था कि सीपीआई की वेबसाइट होनी चाहिए, और उस टाइम हमारा और रामजी लाल सर का डिस्कशन हुआ था कि वेबसाइट को हमें लाइव करना है, पर कभी कंटेंट नहीं प्रॉपर हो पाया, लाइन कभी बहुत सारी चीज़ें रही उसमें, तो प्रॉपर सेटअप नहीं हो पाया। तो फाइनली अब जा करके सारा कंटेंट भी रेडी हो गया, सारा उसमें अलाइनमेंट भी हो गया, और फाइनली जो है वो लिंक लाइव आज हो गया है। तो जो सर का कॉन्सेप्ट था कि जो उनका एक ड्रीम है कि जो हम सारी चीज़ों को एक सेंट्रलाइज्ड मैनर में लेकर के आए और एक जगह पे सीपीआई की सारी चीज़ें आ जाएं, तो वो अब काफ़ी हद तक इसमें आ चुकी हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। मैं एक दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा आज जी राय सर। साहब जी जी। आप सबके संज्ञान के लिए, कि अब रिक्वेस्ट करना है अपने साइकोलॉजी फ्रेटर्निटी से कि वो कम्युनिटी में जा करके जो भी काम कर रहे हैं उनको वो हम तक मुहैया कराएं, वो एक ब्रीफ रिपोर्ट दें और फोटोग्राफ्स दें, हम उनको इसमें ऐड करेंगे। ये हमारा अपनी सोच है। तो सबसे इनवाइटेड हैं, जो चाहे वो कम्युनिटी साइकोलॉजी का मेंबर है या नहीं है, अगर अगर वो चाहता है कि उसकी एक्टिविटीज हाईलाइट हों, लोगों के बीच में जाएं, तो वो हमको आशीष जी को अप्रोच करें और कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन की वेबसाइट में वो चीजें आए, और आने वाले और भी जो एक्टिविटीज होंगी उसको हम लोग इस तरह हाईलाइट करेंगे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रोफेसर सक्सेना साहब हैं, मैं आपके संज्ञान में सर डालना चाहता हूं कि वेबसाइट के साथ एक काम और हम लोगों ने प्लान किया है, उसको आज हम डिस्क्लोज करना चाहते हैं। हम एक सीपीआई बुलेटिन हम निकालने जा रहे हैं। सीपीआई बुलेटिन क्वार्टरली करने जा रहे हैं। अभी तो हम एक साल का 2022 में जितने भी इवेंट्स हुए हैं कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन के द्वारा और जो भी चीजें आई हैं सामने, उन सबको हम एक एनुअली ढंग से दिसंबर तक उसको हम पब्लिश करेंगे और ई कंटेंट के रूप में उसको हम डेवलप करेंगे। और हमारा यही है कि उसमें फिर उसके बाद क्वार्टरली करेंगे, हर 4 महीने पर निकलता रहेगा और उसमें सारी एक्टिविटीज वो हाईलाइट होती रहेंगी और वो हमारी एक्टिविटीज कंटिन्यू रहेगी होल ईयर। जो भी 2, 4, 5, 10 जो भी एक्टिविटीज आएंगी उनको हम उसमें डालेंगे और उसको उसमें हम तय किया है कि कुछ आर्टिकल्स भी हम उसमें 1-2 डाल देंगे। यही मैं सजेस्ट करने वाला था कि देखें आज की तारीख में पिछले कुछ समय में मैंने एक्सपीरियंस किया कि सभी जर्नल्स तो नहीं लेकिन ढेर सारे जर्नल और मटेरियल्स ओपन एक्सेस में अवेलेबल है। कुछ एक तो भाई वो ब्लॉक है, आप उनको पेमेंट देंगे तभी वो रिसर्च गेट है, वो पेमेंट करेंगे तभी आप अंदर घुस पाएंगे और उसको ले पाएंगे। लेकिन ओपन एक्सेस में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। और कहीं मैंने एक आइडिया फ्लो किया था कि हम सारे लोग मिलकर के ओपन एक्सेस मटेरियल जो है स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए अवेलेबल कराएं। ये सब कुछ फेसबुक पेज और इस उससे नहीं हो पाता है। वेबसाइट्स हैं जिसको कोई भी विजिट कर सकता है और उस पर अगर स्टडी मटेरियल ओपन एक्सेस में है तो कम्युनिटी साइकोलॉजी के हिसाब से स्टडी मटेरियल भी और जो कुछ हम आप लिख पढ़ रहे हैं वो जर्नल के फॉर्म में जब हो तब हो, ना हो कुछ ऐसे भी 1 पेज का 2 पेज का कोई नोट ही लिखा वो उस पर रहे, उस पर जाए तो हाँ यही है। जैसे आपने अभी बात कही कि मान लीजिए कि हमको एक आर्टिकल 2 पेज की अगर हमको मिल जाती है, कुछ टिप्स मिल जाते हैं, हम डाल देंगे उसमें जो अपना। तो इस तरह से हम स्टडी मटेरियल को भी हम एक सीरीज चला सकते हैं उसमें विभिन्न कम्युनिटी से, क्योंकि बहुत से लोगों को स्टडी मटेरियल की जरूरत होती है
महसूस करते हैं, वो चाहते हैं कि हमको कुछ स्टडी मटेरियल प्राप्त हो, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे और उस पर हम लोग चाहेंगे अच्छा, कि उसको देख लिया जाए, अगर हिंदी इंग्लिश करके डिवाइड करके कुछ मैनेज करने का बनता है तो वो हो जाए आशीष जी। क्योंकि हमारा जो इस नॉर्दर्न प्लेन का नया जनरेशन है, एक तरफ तो भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन हमारी जो साइकोलॉजी की फ्रेटर्निटी है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो नए लोग आ रहे हैं, अब ये जहाँ से जिन कंडीशन में पढ़ के आ रहे हैं, उनमें से मेजॉरिटी इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडी मटेरियल्स और बुक्स यूज करने की कंडीशन में नहीं। और हमें अब संकोच भी नहीं होना चाहिए, हम लोग हिंदी में खुद जो है ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल ले आए, नई जनरेशन उसी में अगर एटीज पढ़ सकती है तो व्हाट इज द हार्म। हम आप सब मिल करके जो है जितना उसमें ला सकते हैं मटेरियल आए। बिल्कुल ठीक, एकदम सही बात है। ये हम लोग अब देखेंगे आशीष जी क्या कर सकते हैं, और ये प्रयास रहेगा हम लोगों का कि सबके लिए उसको एक इजीली एक्सेसिबल उसमें बनाया सर जाए। और हम लोग गूगल ट्रांसलेट का एक वो रहता है, प्लगइन रहता है। गूगल ट्रांसलेट के प्लगइन के थ्रू हम लोग उसमें ऑटो ट्रांसलेटर रहेगा, तो जो भी कंटेंट वहां पर डाला जाएगा वो ऑटोमेटिकली सभी के लिए सभी लैंग्वेजेस में एक्सेसिबल होगा। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना, वो गूगल ट्रांसलेट करने में कुछ का कुछ हो जाने का रिस्क है। नहीं नहीं, ये जो ट्रांसलेटर होता है ना, ये एपीआई बेस रहता है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली उसको जो है एज इट इज ट्रांसलेट करके देगा लोकल लैंग्वेज में। चलिए देखा जाए। अच्छा है, बढ़िया है, हाँ, अगर ऐसा हो जो हम लोग जाएगा तो। ट्रांसलेटर यूज करते हैं उसमें तो वो वर्ड्स को मैनिपुलेट कर देता है, उसमें कोई वर्ड का मीनिंग कुछ और होता है, वहां पे वो मीनिंग कुछ और डाल देता है। हाँ हाँ, पर ये जो हाँ। वेबसाइट ट्रांसलेटर होता है, ये वेबसाइट ट्रांसलेटर एज इट इज कंटेंट को ही चेंज कर देता है। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आशीष जी। तो ये कुछ हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर ये जो एक्टिविटीज हैं वो आप सबके सामने है। और एक बार फिर मैं आशीष जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने हमारे एसोसिएशन को एक नई दिशा दी है और एक नए क्लेवर में हमारा एसोसिएशन हम लगता है कि आ जाएगा। और आने वाले समय में भविष्य में भी हमारी एक्टिविटीज ऑन गोइंग रहेंगी, चलती रहेंगी। भले ही एक ही आर्टिकल मिलेगी, भले ही 4 ही फोटो मिलेंगे, लेकिन वो अपने समय पर वह उस बुलेटिन निकलेगी और लोग उसको देखेंगे। तो हमारी अपनी एक एसोसिएशन की जो गतिशीलता है वो बनी रहेगी। तो निश्चित रूप से ये डॉक्टर नहीं, आशीष पांडे समय जी, आ गया सर की जो है आशीष पांडे जी को, कुमुद जी को, इन लोगों को अब फील्ड के अंदर खेलने हाँ, दीजिए। नहीं, फुटबॉल बिल्कुल हॉकी वो, ये लोग खेले, हम लोग दर्शक दीर्घा में अब चले। हाँ, तो यही कर दिया गया है, यही किया गया है कि ये लोग आगे लें और आगे बढ़ाएं। तो ये हमारी अपनी खुद की इच्छा ऐसी है, तो हम लोग इसको वाइंड अप ठीक है। करें। कल का फिर कल की तैयारी हाँ, कीजिए। कल वो कल नंदा साहब हैं हाँ, और एक और लेक्चर है, लेकिन नंदा साहब के साथ थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, फिर भी हम लोग उनके लेक्चर को मैनेज करेंगे, ये प्रयास किया जाएगा। तो चलिए। एक बार फिर सबको धन्यवाद और सबको आभार, सब लोग आप लोगों ने समय दिया, आए, और इसको ओके सर। 2-3 दिन की बात और है, बस नमस्कार। इसको नमस्कार लेते सर। चले। नमस्कार, 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 सर, नमस्कार सर। आप कुछ बोले नहीं सर, आपका कमेंट नहीं मिला कुछ। हेलो, कल हाँ प्रोफेसर सर, गौतम गावली का लेक्चर है। हाँ जी, कल गौतम गौली का है और नंदा का है। नहीं, कल एक ही है, सिर्फ गौतम गावली साहब का। नहीं सर, उसमें हमने उनको ऐड किया था, लेकिन वो आने वाले नहीं हैं। जी के ठीक। नंदा, उनकी वाइफ थोड़ी पीड़ित है कैंसर से,
तो उनका उन्होंने पीपीटी भेजा है, अब थोड़े देर में उसको दिखा लेंगे, लेकिन वो गावली साहब का तो है ही लेक्चर पूरा। ठीक। तो आपने इस पर कुछ कमेंट नहीं दिया वेबसाइट पर, कुछ सजेशंस कुछ चाहिए थे आपके? नहीं, कमेंट तो सब आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट दे दिए, तो मैं ये ऐड करूंगा कि ये बधाई के पात्र हैं। और उसमें स्टडी मटेरियल में ये भी चाहूंगा कि आपने शुरू से जो कुछ इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हुए हैं, चाहे प्रोफेसर हाँ राजाराम बिल्कुल मेमोरियल लेक्चर्स दिए हों, जी कई लोगों ने दिए हैं जी जी प्रोफेसर जी। राजाराम मेमोरियल लेक्चर, उनको भी उसमें डालिए। हाँ प्रयास करेंगे, मिल जाने की बात है सर, क्या बताएं। और अभी सानी साहब ने जो जयपुर हाँ में वो जो कीनोट हाँ वो एड्रेस दिया आप था वो डालिए। हाँ वो डालेंगे सर, डालेंगे। ये कहने जा रहा था मैं हाँ कि उसमें आपके कुछ कई लेक्चर्स हैं जिनको कि हम उसमें रखेंगे। यही तो हमने सोचा है कि जितने पहले के लेक्चर्स हैं जो मिल जाएंगे वो सब के सब उसमें एक एक इश्यू में डालते चले जाएंगे। हाँ। जी तो यही है सर। और जो आपके फंक्शंस हुए हैं, जैसे अभी आपने कुशीनगर में किया था, हाँ उसको करना है सर, वही देना है, वो वही सब तो डालिए। हाँ वो सब उसको भाई डालना है, वही बाकी रह वो गया तो है। वही डालेंगे जो आप भेजेंगे, आप भेजिए हाँ हाँ उनको। नहीं नहीं बिल्कुल भेजेंगे भेजेंगे सर, वो क्वेश्चन वाला भी फंक्शन जाना उसमें है। और इस तरह से जो भी होते रहेंगे सब उसमें पढ़ते रहेंगे, और हमारी वेबसाइट बिल्कुल एकदम लाइव रहेगी। जी ठीक, थैंक यू। ठीक है सर, नमस्कार। Good night, sir. हाँ अभिषेक जी, गुड नाइट। And sir, congratulations to all the experts. थैंक यू थैंक यू थैंक यू अभिषेक जी। आप कहाँ पर हैं? मैं वाराणसी में हूँ, स्टूडेंट हूँ, अच्छा काउंसलिंग पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग ऑन साइकोथेरेपी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो जी सर, आप तो मैंने हमारे व्हाट्सएप पर अपना डिटेल डालिए, आगे हम लोग कुछ काउंसलिंग के लिए कुछ काम करने जा रहे हैं, तो आप जैसे लोग रहें तो अच्छी बात है। जी सर, व्हाट्सएप नंबर आई सर कहाँ से मिल सकता है? अब मिल जाएगा, अब लिखना हो तो लिख लीजिए भी, बहुत हाँ जी ईजी सर, है। जी सर, 9452 जी सर, 9452261436। और अब तो वेबसाइट खोलेंगे तो आपको कांटेक्ट नंबर्स मिल जाएंगे। जी सर, जी सर। सर मुझे हाँ जब से तो ये आप जी सर, मुझे 10th अक्टूबर से ये लिंक मिला, तब से मैं रोज ये सेशंस अटेंड कर रहा हूँ। यानी बहुत 7 अच्छी to बात 9। है, इसीलिए तो बनाया गया कि लोग आए सुने देखें, कुछ तो यस सर, जानकारी बस मिली आपको। तो जो बस नहीं ज्वाइन जी किए सर, जी उनकी सर, तुलना में तो आपका तो प्रयास प्रशंसनीय है। जी सर। और सर स्टार्टिंग से तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैंने आशीष सर को मैसेज एक बार किया था, सर ने बोला कि जल्दी ही वेबसाइट क्रिएट होगा, तो आप देख सकते हाँ हैं। हाँ नहीं नहीं वो तो लगे हुए थे। तो आज चलिए तो ठीक बहुत है। हाँ, आज बहुत खुशी है कि बिल्कुल आप देख सकते हैं, और मैंने काउंसलेशन भी चैट बॉक्स बिल्कुल में बिल्कुल सारी चीजें ओपन हो जाएंगी आपको। सही सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके गुप्ता जी जी। सर, आशीष जी, जी सर, तो चलिए कांग्रेचुलेशंस टू यू, थैंक आपने यू। बड़ी मेहनत करके आपने वेबसाइट को डिस्प्ले कर दिया। अब आगे इसमें हम लोग वो करते रहेंगे, और फिर जो और जो बातें हम लोग की होती हैं वो होती रहेंगी। जी हम्म, तो चाहे तो वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है सर। हम्म, Thank you, sir.